Okay, so tell me something about the operator. Who will give the explanation about the operator? You, Boli. Operator is a thing which Boli. operator is a thing that performs Operator is things things or we can which say kind of things? logical things. So things means what we can say now. So can we say operator is a token? Token. We can say token also. Sir, operator is a symbol which can perform operation written documents. Operator is the symbol or word that may perform a special operations on the operands. Operator is nothing without operands. Okay. How many types of operators in C? 3 or 4. 3 or Bully. Sir, there are many operators like logical operators, relational. There are many types of operators like logical operators. Ternary operator, dot operator. There are a lot of kind of operators. Okay. So What is arithmetic operators? That is used, the operator that is used to perform a Mathematical arithmetical Perform mathematical arithmetic calculation. Okay. So whenever we use the arithmetic operator or mathematical operator, then how we can, in which form we can obtain the result? mathematical form. In which form we can obtain the result if we are using the math operators or mathematical operators or arithmetical operators. We can always obtain the result in form of numeric. That's why in a string, perhaps plus operator used to calculate. I'm not discussing about the string because the string has a different type in So C. there are so many meanings. And we are not discussing the math operator for the string because we know very well that we can't perform any of mathematical operation on the string. Okay. This is the additional part that we can use the plus sign with the string. That is logical. ठीक है, and these features provided by the C language. ठीक है, that may be or that may not be. बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जहाँ पे प्लस नहीं भी होता है. ठीक है, तो arithmetical operators always return the result in form of number, in form of numeric. Sir, if it will perform on a number, यदि ये नंबर को परफॉर्म करेगा तब नंबर. Apart from number, where you can use it? Like Krishna said. Krishna said string. I am just telling him that it is a optional part. ये हो सकता है लैंग्वेज में, नहीं भी हो सकता है. लैंग्वेज ये दे रही है फैसिलिटी दैट यू आर यूजिंग, नहीं दे रही है. बहुत सारे लैंग्वेज में नहीं होता है प्लस कॉन्केटेनेशन का, नहीं होगा. लेकिन अर्थमेटिक तो अर्थमेटिक है. ठीक है, ओके. So let's come to the next operator, that is a logical operator. One question. Can we include concatenation as a arithmetic operation? Can we? Can we say that concatenation is a arithmetic operation? No, you can't concatenate two numeric values. Yes. If you want to concatenate two numeric values, then first you have to convert both numeric value into string or character, and then after you can convert. Directly you can't provide
any concatenation on the numeric value. See, the word concatenation is not suitable for the numbers. It is all suitable for the character or string. And so concatenation is another thing. Like What? it will add, not add that particular things like 2 plus 2 is 4. It will add 2 plus 2 equal to 22. That's why it is another things. Like it will add two things, but not. The word concatenation always be applied with the character or string first. Yes, first. This is the important concern. Mhm. A character or a string may be alphabet, may be numeric, Yes, sir. or maybe digit. Okay? तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि 2 plus 2 अगर 22 आ रहा है तो ये कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है. So that I am telling. ठीक है. This is the ठीक है string और character operation. Yes, sir. So let's come to the next type of operator, that is called relational operator, and then after we will come to logical. Then relational operator. Give me some examples related with relational operators. Less than, Less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, Greater than equal not to. equal to. not equal to. ठीक है. What happens when we relational operator applies on the operands? Give the It will Give give the a result in Boolean this form. results. It Boolean. gives the Boolean result. ठीक है. So we can obtain the result in form of true Yes, sir. Or false. or in form of false. ठीक है. Generally, how C will observe the true part and how C will observe the false part, because there is no constant keyword as a true or false. 0 or 1. Any positive number is treated as a true, and the any 0 and negative number is negative, not No, negative. 0 is zero is treated as a false. Okay, let's come with the computer architecture or operating system. If we assign some positive value or some negative value, and we know that ठीक है, for mentioning the sign, one bit is reserved. Yes, One bit is reserved for plus or Then minus. how computer will recognize the positive value and the negative value? क्योंकि एक बिट है तो उसमें या तो 0 होगा या तो 1 होगा. Yes. तो नेगेटिव किसे, पॉजिटिव किसे? So if there is 0, then that number is treated as a positive. If there is 1, then that number is treated as a negative. Negative, absolutely right. If the bit is 0, that will be treated as Positive. positive, whereas bit is 1, that will be treated as negative. और आई थिंक इसी पे आपको 1s कॉम्प्लीमेंट और 2s कॉम्प्लीमेंट Yes, sir. के बारे में भी कुछ डिस्कस किया गया. Yes. Okay, so let's move to the next operator, that is a logical operator. Okay. What is logical operator? It is used to add the two relational operation. Two expressions. Two expression. Two or we can more simply say. expressions. If we want to combine two or more expressions or two or more conditions, ठीक है, then we have to use the logical operators. And or not. The logical operators generally are 3 types. One is and or. Both are allowed for combining more than one expressions, but not is used for Single. generally for the single expression. Like I indicate, Yes. if we combine two conditions, if one condition will be true, then treat it as a true. If any one false, treat it as False. ठीक है. If we combine two expression using or operator, if any one true, The result will be true. If both are false, then it will be false. Clear? ठीक है.
And in terms of not, if the condition is true, it will be make that condition false. If the condition is false, it will make that condition true. Yes. अगर true है तो false करेगा, false है तो true करेगा. Okay, let's come to the assignment operator. It assigns the generally right side value to the left hand variable. Okay. And equal is a assignment operator. And what do you mean by compound assignment? Do you know about the compound assignment? Yes. Is it Plus and equal to, that is the compound, like Any minus equal mathematical to. operator equal to is called a compound assignment. Like plus equal is a compound assignment. Minus equal to is also compound assignment. Multiply Multiply equal equal to is also compound to. Divide assignment. equal to percent. ठीक है? Clear? And what is the difference between the simple assignment and the compound assignment? If somebody asks, what is basic Simple difference? assignment only stores the value, and it first it increase or decrease and the perform operation and then store. ठीक है. We have generally discussed four kinds. We have learned Yes, sir. right shift by two. If we shifting the number by one bit, अगर एक बिट से करते हैं तो राइट शिफ्ट में हाफ हो जाएगा. अगर एक बिट से करते हैं तो लेफ्ट शिफ्ट में डबल हो जाएगा. ठीक है. सिमिलरली अगर दो बिट से करते हैं तो राइट शिफ्ट में हाफ का हाफ हो जाएगा. और अगर हम दो बिट लेफ्ट शिफ्ट में करते हैं तो डबल का डबल. सो एवरी टाइम दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2 or that will be multiplied by 2. Clear? And what about the and or and operator? Sir, and operator, if there is a change is one, and Sir, work as a and Sir, obviously it is a zero and. कहाँ गए थे? Sir, form fill up. Who is the inspector? मेरा थोड़ा बहुत अलाउड है. From my side, it is allowed for smoothly running the class. so it is not going on in this class. Who is the class coordinator? Murli sir. Murli sir has not make inspection class. No, sir. Murli sir has taken class today. Yes, sir. And they said that we have to pay 200 rupees. Yes. First of all, you all guys have to advance pay the rupees 200. Okay, and Some then people- after deduction will be continue. Some of them. तो अभी तो इतना हो ही सकता है ना कि जो डिडक्शन है वो मेंशन हो जाए. बाद में जब पे होगा तो डिडक्ट कर लेंगे. Yes, sir. But it is not followed in It this is not class. followed. It is not follow. It is not followed in this class. There is no deduction. No, you should make the deduction. If So you want some to, people want. if you want to speak in English, something to speak in English, then you must have to make these things. ऐसे तो महात्मा आप हैं नहीं कि कुछ कहा जाए आप करने लगे. तो कुछ काम तो कोर्स से भी कराया जाता है. सब जगह होता है. ठीक है. ये कोर्स कई तरीके के हो सकते हैं. फाइनेंशियली ज़्यादातर चीज़ों में फाइनेंशियली ही होता है, क्योंकि पैसा एक लोभ होता है जो हमको चीज़ों को करने के लिए इंसिस्ट करता है ना. फ्री का काम में लोग इंसिस्ट नहीं करता. सरकार कहते हैं कि सब मुफ्त की शिक्षा. ठीक है.
तो बहुत लोग इंसिस्ट नहीं करता है, तो सरकार भी फीस लेती है, भले 5 रुपये ले, 10 रुपये ले, 20 रुपये ले, फीस लेती है। सरकारी स्कूल में भी कुछ कुछ उनको 10, 20, 50 रुपये देना पड़ता है, क्योंकि कम्प्लीटली इसको फ्री करने से कि इसका वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, और वही फिर भी आप सरकारी स्कूल को उतना तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन प्राइवेट में आप जब पैसा दे देते हैं तो हमेशा वो, अरे इतना पैसा दिया है छोड़ कैसे दें। तो एक तो ये होता है, दूसरा और दूसरी चीज़ों से हो सकता है। और आपको कहा जाए कि इफ यू नॉट स्पीक इन इंग्लिश देन आई विल डिडक्ट योर मार्क्स, ये भी फोर्स हो सकता है। ठीक है, आपके 10 नंबर इस इंग्लिश ड्राइव को सक्सेस करने के लिए हैं। नहीं किए, नहीं हुआ कुछ, 10 नंबर माइनस, तो आप पीछे हो गए। ठीक है, तो आप नेगेटिविटी गो विद द पॉजिटिविटी। तो मैं मुरली सर को बोलूँगा कि इंस्पेक्टर इसमें बना दीजिए। वैसे अगर आप लोग खुद में 5-10 आदमी अगर मिलके एक लिस्ट बना दे कि आई एम रेडी टू मेक माई सेल्फ एज ए इंस्पेक्टर, तो अपना अपना नाम दे दें, रोल नंबर दे दें, मुरली सर को बता दें। ठीक है, तत्काल एक डिडक्शन का ये बनाते रहे, अपने पास नोट करके रखें कि he is speaking 2 words in Hindi, he is speaking 5 words in Hindi, एक बना के अपना लमसम रखे रहेंगे जो भी इंस्पेक्टर है। और जब क्लास कोऑर्डिनेटर उनसे मांगे तो वो प्रोवाइड कर देंगे, सर इस दिन में इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 3 है। Not 5 and 4 and 3, only uses Hindi. Then how we can determine how many words they speak? Right, 20 words, 50 words. So, we will know within the 2 days. Don't count as it is how you are speaking. I'm watching, I'm listening. अब मैं गिनती गिनने में लगूंगा कि वो 1 बोल रहा है, 2 बोल रहा है, 3 बोल रहा है, कितने को देखूंगा मैं? Just assume a lump sum. ठीक है, if thoroughly speaking in Hindi, ठीक है, put them 50 words. आप ऐसे रिजल्ट नहीं रख सकते, फेसबुक में देखें तो सब You start with the Hindi. There is no सोनू शर्मा, कपिल शर्मा, कपिल शर्मा, जैसे जैसे आप चेक कर रहे थे सर, उसके बाद रेखा ने भी सीधा जवाब दिया, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश। इस तरह से सर जैसे आप जवाब दे रहे थे, कपिल शर्मा बोला था। नहीं सर, रेखा ने जवाब दिया था सर। अच्छा, रेखा एक्ट्रेस। Kapil Sharma also. Rekha she is an told him actor. that She don't have to speak English. I can talk. But we need to speak. No? Actually, this dialogue was given by basically the Mr. Amitabh Bachchan. Yes. I can talk Yes, sir. English, I can laugh English, because English is a very funny language. Yes. ठीक है, this dialogue is directly related with the Amitabh. Mr. Amitabh Bachchan. ठीक है, and in which film I don't. The film was Mr. Natwala. Sorry, Namak Halal. Namak Namak Halal. was ठीक है, he was given this dialogue in the film Namak Halal. I can talk in English, I can laugh in English. उसमें and he was speaking in English for the cricket तो उन्होंने कमेंट्री को, 1 मिनट के कमेंट्री को, ठीक है, वो 1000 तो सुन लीजिएगा, नहीं तो पूरा मेरे को भी नहीं आता है। तो उस कमेंट्री को उन्होंने बताया, और फिर उन्होंने फाइनली ही आस्क्ड हिम कि मेरे इस
स्पीकिंग पे और गुड फिल्म सबको देख लेना चाहिए। फिल्म सबको देख लेना चाहिए। आई हैवंट सीन बोल बच्चन, ठीक है, तो आप नमक हलाल देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है और प्लस थोड़ा सा इंस्पिरेशनल भी है, कॉमेडी भी पूरा है, इंस्पिरेशनल भी है, कॉमेडी पूरा है, फिल्म शुरू से आखिरी तक कॉमेडी से भरा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ इंस्पिरेशन भी मिलेगा जो आपके लाइफ में काम का चीज़ So है। when you had was अब मैं तो ऐसे भी इधर भी कभी कभी देखता हूँ, रहा है तो देख लेता हूँ, वैसे तो बहुत पहले का देखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक how can you आई remember वाज that सीन things? इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में मैंने I'm देखा। forgetting everything. You are for it. So anyway, let's come to the study. And what about the ternary operator? It works as a fields, but one line. Can we say that ternary operator is a conditional operator? Yes, sir. Yes, sir. If somebody asks ternary operator or conditional operator and conditional statement, which one is faster? Operator is always faster than the statement. Okay? Because whenever you start the C language, the operator will store inside the memory at the same time. Yes. ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट जो है उस टाइम पे नहीं आता है। जब स्टेटमेंट यूज होता है तो मेमोरी में आता है, काम करता है, मेमोरी रिलीज कर देता है। पर ऑपरेटर आपके मेमोरी में जब तक सी ओपन रहता है तब तक रहता है। क्लियर? ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू दी what do you mean by formatted input output and unformatted input output? So formatted means we can specify the palace and we can specify the screen palace on a screen where we want to display and where we want to get input from. You can But and for that you are saying that it is a formatted and unformatted. where we can't specify a specific, we can't accept anything from a specific palace or give them to So a we always have to use the predefined format. Yes, sir. We can't change that format. Okay, we always have to predefine the set format. So that kind of function is called a unformatted input output. Okay. What do you mean by printf function? Printf function, which kind of value return? Printf function किस तरह का value return करता है? कृष्ण कुमार Printf function. value return करता है नहीं? Is this printf return the value or not? Yes or no? Printf returns the value or not? Yes. 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 So which type of value it will be returned? Numeric. It return 5. Why it is returning 5? Length of the message. Okay. So hello having 5 characters and that's why it is returning. Okay. And what about the scanner? The scanner also return the integer value or not? Yes. Yes. Then what is the meaning of returning value here? We can in C we can use 3 specifier, but we can put the 2 करेगा. Variable is also specified. Variable is not a specifier. Specifier is another term. Variable is another term. Yes. Specifier, ठीक है, actually specify the value of the variable. Fast term. अच्छा.
Okay, so let's move to the सर बुला लो। okay, so let's move to the next thing. What do you mean by nested if? If with dependent condition means one अच्छा, condition dependent depends on conditions. another. Dependent conditions found, then we can use Nested. nested if. Okay. And what do you mean by ladder if? Multiple conditions. Multiple But every- conditions, only one condition will satisfy at a time, then we have to use Ladder. ladder if. Okay. And what is switch statement? It is basically used to match the particular And what is the condition. difference between switch statement and the ladder if? Ladder if just used to X that with variable with the value. If our problem based on the expression or conditions or the range of values, then we always apply the ladder if. Yes. But when our problem based on the constant value or choices, then we normally use as switch statement. ठीक है? But in Python there is no switch statement. Only ladder if. There is a new concept called match case, sir. In Python. Yes, sir. In 3.10, sir. You know, Okay, it may be. But same switch case. that's yes. There will be no- ठीक है. Python, actually Python Used as a substitute of Java. ठीक है, इसमें वेरिएशन बहुत है. 2.3 के पहले प्रिंट विदाउट ब्रैकेट लिखना पड़ता था. 3 वर्जन जो आया उसमें प्रिंट को क्या कर दिया, ब्रैकेट के साथ कर दिया. लॉट ऑफ चेंजिंग, फीचर वाइज भी लॉट ऑफ चेंजिंग है. कीवर्ड्स बदलते रह रहे हैं, बढ़ते रह रहे हैं इसके. ठीक है. The reason behind is data science and machine learning completely specific नहीं Sir, है. if we don't use the print of the parenthesis, what is But if you are using the 2.8 or 2.9, this will not show the error. so to put their parenthesis with print function, that is the reason of data science. I don't think like that. It is Maybe to I make don't know concept why it is complexity in the happening. language. Why it is happening that version 2 or more supported print without bracket, whereas 3 and above supporting the print with bracket. I don't know much more things why it is going so. ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, पर मैं ये एक चीज बता रहा हूँ कि इसके अमेंडमेंट में जैसे उसने कहा कि मैच केस इज अमेंडेड इन न्यू वर्जन, जो भी 3.1 समथिंग आया है लेटेस्ट. तो उसमें इसलिए हो गया होगा कि ऐसी ज़रूरत तो पड़ी होगी हमें एआई और मशीन लर्निंग को लेकर. कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरतें अक्सर आती होंगी. तो पाइथन को रियलाइज़ हुआ टीम को कि ये डाल देना चाहिए. उन्होंने एक नए अमेंडमेंट के तौर पर डाल दिया. हो सकता है आगे और भी मिले, आगे और भी चेंज भी एक्सेप्टेड इसलिए होगा कि द कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ एआई, डीप लर्निंग आर नॉट कंप्लीटली फिक्स्ड. एवरी टाइम, ठीक है, वी आर सर्चिंग समथिंग न्यू. Yes, sir. हर बार कुछ नया उसमें खोजा जा रहा It है. is an expenditure. ठीक है, Expenditure. और जितनी चीजें खोजी जा रही हैं उतनी का इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है. ठीक है, तो अभी ये ग्रोइंग फील्ड है और इससे रिलेटेड जो लैंग्वेज होंगे वो भी ग्रोइंग फील्ड में ही रहेंगे. चलिए, ओके.